Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Welcome to another amazing episode of Post Market Analysis, and we'll discuss everything and analyze everything about what can happen in tomorrow's trading session, that is on Monday, and what happened in today's trading session. Now, today the market saw a huge consolidation with a huge volatility. Nifty 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी, और बाय द एंड ऑफ द सेशन approximately around at 3 p.m. all the heavyweight stocks fell down and so did Nifty 50 index. 3 बजे के बाद भारी गिरावट आई इंडेक्स के अंदर, 110 पॉइंट तक नीचे गिरा इंडेक्स फ्रॉम द टॉप, एंड दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ fall in the heavyweight index from the Nifty 50 index, including HDFC Bank. Now HDFC Bank is about to declare its results, and there is a huge possibility of short covering or gap up opening in HDFC Bank on Monday. If that happens, Bank Nifty might again be back on its feet and it might start to fly again. So let's go ahead and discuss everything about what can happen in the markets in the upcoming trading session. And forgive me for my looks. As you know, it's a lockdown everywhere here, and that is the primary reason I'm not able to get myself groomed, but that is okay. Let's focus on the video right now. This is not Krish Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show. Okay, so let's quickly jump into the video and let's try to understand and analyze what happened in the markets. Okay, so let's quickly look at the market data first of all. Let's quickly look at the market data first of all. If you can see right here, the advance to decline ratio for the Nifty 50 index was 36 advances and just 14 declines. So the advance to decline ratio was pretty good, but still the index mainly consolidated all day long, and at last it fell a bit. What we'll do is we'll quickly look at the FII DI data as well, if it is out. Yes, it is out, and if you can see, the FIIs were the net buyers in the market for straight 2 trading sessions now. After selling for 3 sessions from 9th April, 12th April and 13th April, now they have started on a buying streak again. Let's see how long this buying streak continues. ये अगर चलेगी तो markets को support मिलेगा. अगर if FII will start to turn bullish on the markets, that will be a good sign. DIIs were again net buyers for the day. FII और DII दोनों की तरफ से ही बाइंग आई 16 अप्रैल के दिन. उसके बाद भी मार्केट्स वर इन अ ह्यूज कंसोलिडेशन. सो व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट्स कभी भी 4 फेजेस से निकलते हैं. द accumulation phase, the advancement phase, the distribution phase and the decline phase. ये जो पूरे phases हैं, अगर आप इन phase को समझ लें तो आपके लिए एक swing position बनाना या long term position बनाना बहुत आसान हो जाएगा. और इनफैक्ट ये जो phases हैं that I call A square D square AADD, that is accumulation, advancement, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लाइन, अगर इनको आप समझ लें तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि आपको मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का मूवमेंट समझ में आने लगता है. एंड माय फ्रेंड, इफ यू कैन रियली marry the markets, if you can understand the markets very well, it is going to be a crucial blessing for you and you will be able to trade much better. So अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे AA जो थ्योरी है इसके ऊपर एक पूरा अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं, just go in the comments below and write down that you want a separate video on AA and I'll tell you, I'll make a complete different masterclass on the accumulation, advancement, distribution and decline phase of the markets, ताकि आप markets को बेहतर तरीके से समझ सकें. So FII, DII both were the net buyers in the market for the last trading session. Let's quickly look at the top performing sectors for the day. So let's look at the gainers for the day. So if we look at the gainers, Nifty Pharma is again doing very well. We have been discussing it from a while now. Nifty Pharma is doing well primarily because the remdesivir doses have been pumped up by the companies. The production has been pumped up by the companies, and the government has approved the foreign made vaccines to be imported to India and make them available to the public. There's another good news from the pharma sector. I don't know how much verified it is. I have just read it on the internet कि Vancouver की कोई company है, that is I think Sanotize, that has produced a nasal spray that you can directly pump up in your nose, and it effectively reduces the infection up to 99%. Now this is the news that has been floating around since past 2 days. अगर ये news सही है और अगर ये दवाई वाकई में कारगर है,
against the coronavirus infection, then this particular thing might be a game-changing thing for the markets. You can go ahead and search on Google, write sanitize Vancouver, and you'll get a lot of news articles from everywhere, from Business Wire, that is a Berkshire Hathaway company, and from Times of India. There are a lot of articles over there. You can go and check it out by yourself. So other than that, Nifty Media was a sector that was up. Nifty Small Cap was up. Nifty Auto, Nifty IT, all were up. Wipro announced the results and the stock was up by 9%. So that was pretty much expected. Now we look at the top losers. Nifty PSU Bank, yes, Nifty PSU Bank, it has, no, Nifty PSU Bank, Nifty Bank, both are underperforming from a long time. काफी समय से काफी heavy selling pressure के अंदर ही है ये. अभी अगर मैं कहूंगा तो कहीं ना कहीं accumulation phase के अंदर है Nifty Bank. That's what I can see. Accumulation phase is the phase जिसके बाद advancement आता है, and when the advancement will come, the bull run might restart. So we have to wait and watch how long does this accumulation or the consolidation phase goes on. अगर ज्यादा लंबे समय तक चलेगा तो we have to stay safe from the Nifty Bank index, and since Nifty Bank is one of the major leaders which move the Nifty 50 index, similar kind of behavior would be seen in Nifty 50 index, and Nifty Bank and Reliance are two major, godfathers for Nifty 50, so they can pretty much show the behavior of Nifty 50 index. इन पे हमको close watch रखना होगा. HDFC particularly from the Nifty Bank index has been underperforming for a long time now. Since beginning of March, it is almost we have done like 2 weeks of April, and it is still underperforming. So that we have to closely watch. हालांकि HDFC ने अपना last week green में end किया है with some recovery, but it's not a very strong recovery. It is yet very much far from the high that it made during the February month. So we have to wait and watch how is it going to go now from here on. So now we look at the post-market bites for a while. We'll quickly discuss about a few things that I have mentioned for you. So Dow Jones has hit all-time high again. Okay, so Dow Jones has hit all-time high, and that is something to watch. On the contrary, Indian markets are struggling with the deep impact of resurgence of coronavirus cases. The coronavirus cases have again come up severely, and Indian markets are still struggling. And recently the cases have crossed 2 lakh mark. 2 लाख से ज्यादा केसेस 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले देखेंगे तो 1 लाख पे थे. 10-11 दिन के अंदर 2 लाख पे आ गए हैं. Please stay safe, my friends. Please stay indoors. Please wear your mask. The infection is spreading like wildfire, and that is again another concern for the markets. So we have to stay safe from this. Now, if you'll go back and look at the last analysis video, हम exactly in same levels के बारे में discuss कर चुके थे, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी ने consolidate किया है last trading session के अंदर. तो अगर आप levels को सिर्फ respect करना सीख लें, just respect the levels, my friend, because levels always, 90% of the time levels work. अगर market के अंदर कोई बहुत bullish या बहुत bearish news available नहीं है, तो levels respect होते हैं. While going up or while going down, that is called the supply in the demand zone or the resistance in the support zone, whatever you call it. So levels are being respected. Now Nifty could not sustain the level of 14,680. कोशिश करी उसको ब्रेकआउट करने की, पर नहीं कर पाया, और 9:30 से 3 बजे तक का जो पूरा टाइम था, उस पूरे ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इंडेक्स सिर्फ 80 पॉइंट की एक रेंज में मूव करता रहा पूरे समय, और लास्ट आवर के अंदर मोर देन 110 पॉइंट्स इट फेल डाउन फ्रॉम वेयर इट वाज ट्रेडिंग जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स बैक. सो निफ्टी क्लोज डाउन द डे एट 14,617. दैट वाज जस्ट 36 points up. That is, I'll say almost a flat end to the day. कुछ खास मूवमेंट नहीं था इंडेक्स के अंदर. It all consolidated and it was a blessing for the option buyers. Again 14,800. मैं टेलीग्राम पे भी आपको दिन में अपडेट किया था कि अगर इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर, go and sell the 14,800 call option. You might get good results out of it for the day, and yes, people did get good results out of the day. So let's blame the whole thing on HDFC Bank and few other heavyweight stocks that saw selling pressure in the last half an hour. Bank Nifty was an extreme consolidation, trading in just a 400 point range. 400 point की range के अंदर Bank Nifty ऊपर नीचे करता रहा. I'm sure in this kind of volatility, a lot of option buyers, a lot of retail traders who are impatient and who just want to trade every single day. कुछ लोग होते हैं जिनको रोज ट्रेड करना है, मार्केट से कोई मतलब नहीं, मार्केट खुला है तो मतलब मैं तो ट्रेड करूंगा. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और फिर ऐसे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं. कुछ लोग 10,000 रुपए कैपिटल लेके आते हैं, कुछ लोग 20,000 रुपए कैपिटल लेके आते हैं, कुछ लोग 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आते हैं, और वो सारी खत्म करके बंद करके चले जाते हैं. You have to understand, my friend, market
is not for everyday trading. If you're an option seller, you might actually hedge the positions, you might actually sell the positions, and as an option seller you have two advantages. अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आपको फायदा होता ही है, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता और कंसोलिडेट भी कर जाता है तो भी आपको फायदा होता ही है. बट एज एन ऑप्शन बायर यू जस्ट हैव वन चॉइस. मार्केट अगर आपके फेवर में जाएगा तो ही आप फायदा कमा पाएंगे. तो आप में से जितने लोग ऑप्शन बायर हैं, I myself is an option buyer. Everyone has a choice. Whether you want to be a buyer, whether you want to be a seller. Sometimes I sell options, but inherently I am an option buyer. I love option buying, and option buying के साथ बहुत important जो चीज होती है that is discipline. ऑप्शन बायर को दिन भर में जरूरी नहीं है कि पूरे दिन भर में ट्रेड मिल जाए, बट अगर ऑप्शन बायर के पास एक अपना सेटअप है कि मैं अपने सेटअप से ही ट्रेड लूंगा. फॉर एग्जांपल, आई रिस्पेक्ट माय सेंट्रल पाइवेट रेंज, आई रिस्पेक्ट माय पाइवेट पॉइंट्स, आई रिस्पेक्ट माय 8 EMA, 50 EMA एंड 200 EMA. और अगर इस पूरे कंबाइंड सेटअप के अंदर कहीं पर मेरा ट्रेड दिखता है मुझे बनता हुआ, तो मैं अपनी ट्रेड लेता हूं. एंड देन ऑल्सो द ट्रेड कैन फेल. The trade can fail, and if it fails, stop loss will come in as a savior for you. So the point is, a lot of members come to the market and start depending on calls and tips. I have told you in past also, and I'm telling you again this time, Roaring Bulls is a channel where you come to learn, my friend. If you are willing to learn, ये हर एनालिसिस वीडियो आपके लिए एक लर्निंग स्ट्रेटजी लेके आता है. ये हर एनालिसिस वीडियो आपके लिए एक एनालिसिस का जो वीडियो है वो आपके लिए एक सीखने की अपॉर्चुनिटी लेके आता है. बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ यू डोंट वांट टू लर्न. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एक्चुअली जस्ट वांट द डायरेक्ट कॉल्स, जो कि बहुत सारे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, न जाने कहां का. डोंट डिपेंड ऑन डायरेक्ट कॉल्स. Where I personally share my trade on Telegram, that is for the reference purpose. Go ahead, self-analyze. I might be wrong, I accept it, I might be wrong. But if you think your analysis and my analysis are on the same page, अगर आपको लगता है कि हम एक similar सोच के साथ बैठे हैं and yes, the analysis might work, go ahead, take the trade, make some profits. If the stop loss hits, take the stop loss and stay happy. क्यों happy? Because आपका capital preserve हो गया. So stop loss is a happy thing. जस्ट इन केस अगर आप 10,000, 20,000, 30,000 रुपए कैपिटल के साथ मार्केट के अंदर आए और ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू, डू नॉट डू इट. ऑप्शन बाइंग के लिए आपको कैपिटल चाहिए 50, 60, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके बैठो. मैं ये नहीं कह रहा कि 10-20,000 से ऑप्शन बाइंग नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. बट द पॉइंट इज 2 or 3 स्टॉप लॉस एंड यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट. एंड स्टॉप लॉस डू कम. ठीक है, तो ये हमको भूलना नहीं है, स्टॉप लॉस डू कम. सो अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आई विल से save some money. Don't leave your job, don't leave your studies, don't leave your business. Save some money out of it and then come into option buying. ऑप्शन बाइंग में भी पहले स्टडी करो बहुत ज्यादा. हर रोज इन वीडियोस को देखो, एनालाइज करो, डिस्कस करो लाइक माइंडेड लोगों के साथ. शेयर करो ना इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, उनसे डिस्कस करो कि यार उत्कर्ष ये चीजें बोल रहा है, आपको क्या लगता है, डज दीज लेवल्स विल दीज लेवल्स वर्क फॉर द नेक्स्ट डे. डिस्कस करो. द मोर यू विल सिट विद लाइक माइंडेड पीपल, द बेटर विल बी द चांसेस कि आप ज्यादा बेहतर ट्रेड सेटअप्स खुद के लिए बना सकें. यार आपका दिमाग ना अगर ट्रेडिंग के अंदर लगा है ना, तो मिनिमम 1 से 2 घंटा रोज का आपको ट्रेडिंग के अंदर फूक देना पड़ेगा आपके दिमाग को. ट्रेडिंग इज अ बिजनेस माय फ्रेंड, एंड एवरी बिजनेस नीड्स एफर्ट्स. ऐसा कौन सा बिजनेस है दुनिया में जो बिना एफर्ट्स के चल गया और सक्सेसफुल भी हो गया? नो, ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस. Business comes with profits, business comes with loss, business comes with effort, business comes with mindset. Treat trading as your business. Okay, let's move ahead. My view on the markets, आगे क्या होने के chances हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं. So my view on the markets ahead, a few more cities across India has been added to the night curfew list. Delhi, Chandigarh, cities from Uttar Pradesh, but I don't truly believe that the night curfew is a solution over here. I don't think so. Night curfew is a solution. Maybe strict norms for wearing mask and things like that might be a solution, but I don't know, like whatever. Nifty Pharma and Nifty IT along with Nifty Metals did well for the past 1 week, and PSU Bank and the Nifty Bank Index, the private banks have not been doing good, and that is something that we have to watch for. So that is one thing over there, and after that, HDFC Bank is about to announce its quarter four results. Well, the markets estimate for the HDFC Bank are over 22%. Now, अगर ये estimates को beat कर पाता है HDFC का result, then we might see some good, gap up opening for the HDFC Bank. And if that happens, the short sellers might have to run for cover, and we have to watch what happens on Monday then. Now let's quickly jump on to the next section of the video. We'll discuss all about the behavior of the index. Let's quickly look at the India VIX. India VIX is approximately around at 20, nothing up, nothing down. It's almost all there.
कोई खास फर्क नहीं है, सो वी कैन नॉट गेस फ्रॉम हेयर कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर. Let's talk about the Nifty 50 index. Nifty 50 index. Can you see something very amazing over here? Can you see the Nifty 50 index consolidated in a small range during the whole day? क्या रेंज थी यहाँ पे? 14,577, जहां हमारा एक सपोर्ट था. यहां से इंडेक्स ऊपर गया. अगला जो रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी मार्क था, माय फ्रेंड. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स. हाउ मेनी टाइम आई हैव टू टेल यू दिस? मार्क देम अप and stay safe from these kind of markets. So resistance hit किया एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, support hit किया एक बार, दो बार. Consolidation, complete consolidation. No use for the option buyers. Just in case अगर आपने इसी सपोर्ट के साथ बाइंग कर ली होती तो शायद आप ये पहला मूव कैप्चर कर सकते थे. Other than that, nothing happened in the markets as an option buyer. What can happen again on the next trading session? Let's quickly see that. Okay. Let's quickly see that what can happen in the next trading session. So what I feel is, what I can analyze from the charts is that resistance 1 is available at 14,681, 14,681. ठीक है, this resistance 1 and resistance 2 is right here at 14,764. ठीक है, ये दोनों आप resistance mark कर लीजिए. This is the resistance. Support की अगर हम बात कर लें तो support आपका I'll say this whole zone is a support zone. Basically this whole zone is a support zone, but I'll still say 14,500 I'll consider as good support. 14,500 is support 1 and support 2 is this 14,416. ये आपके support 1 और support 2 हो गए. Looking at the 5-minute charts, 5-minute time frame, we have discussed these supports for the upcoming trading session. Now what we'll do is we'll go on to, I hope आपने इन supports को mark कर लिया होगा. मैं live market में आपके साथ Telegram पे, जनरल टेलीग्राम चैनल पे भी ये सारे लेवल्स शेयर करता हूं. आई होप यू आर वर्किंग ऑन द लेवल्स एंड आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एबल टू फाइंड good strength in their knowledge from the videos that we are making. I am so blessed to have a good community of people around us that are highly charged to learn, highly motivated to learn. Let's go ahead and look at the Nifty 50 index from a bigger perspective. We are looking at it at a 15-minute time frame as of now. Again at the 15-minute time frame as well, if you can see, अभी हमने जो levels discuss किए वही हमारे important levels हैं. Let me quickly change the pencil color. Yes. So this is your resistance zone. This is your resistance zone. 14,617 to 14,671. ये आपका पूरा resistance zone दिख रहा है. क्या है? 14,617 से लेके 14,671 का ये आपका resistance zone है. अगर ये breakout होता है तो फिर आपको 14,779 जो हमने अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया, 5-मिनट टाइम फ्रेम पे, यहां तक आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाता हुआ दिख सकता है. सपोर्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दिस होल जोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बाय द वे. ये जो जोन मैंने बना रखा है ना, दिस इज योर डिमांड जोन. सो यहां पे आपको एक पूरा जोन मिल सकता है. दिस पर्टिकुलर जोन इज द जोन ऑफ 14,466 टू 14,488. यहां से आपका इंडेक्स अगर नीचे आता भी है तो वापस ऊपर की ओर जा सकता है. इट माइट कंसोलिडेट, इट माइट मूव अप, बट नीचे इससे जाना अभी इससे नीचे जाना थोड़ा tough है. There's a lot of call unwinding at the 14,800, 14,900 levels, and call unwinding basically means that the bullish strength is coming back to the markets. Okay, so that you can look at the option chain. Today we are not looking at the option chain as of now. If you can see कहां से आए हैं levels निकल के, can you see it here? ये जो आपको एक बड़ा downfall दिख रहा है, यहीं कहीं इंडेक्स ने जाके halt किया है. So that is how beautifully the historical support and the historical levels work, my friend. Next resistance कहां से निकल के आया है? हमारे previous levels से. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा next resistance निकल के आया that we have just discussed, 14,779, और उसका अगला resistance उसके भी ऊपर के level से निकल के आया. Let me drag down the chart for you so that you'll be able to clearly see it. Can you see that now? Let me again, क्या आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे? This is your next resistance zone. ये हमने अभी जो डिस्कस किया. So 14,861 to 14,882. This we have discussed. You know what is your resistance, this is your resistance zone, and you know what is your support, this is your support zone. ठीक है, दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं. एंड द इंडेक्स कैन ट्रेड एनीवेयर बिटवीन दिस रेंज. ओके, तो आपको बेसिकली सिर्फ इसका वेट करना है कि सपोर्ट पे अगर इंडेक्स आता है तो यू कैन स्टार्ट बाइंग, एंड अगर रेजिस्टेंस पे इंडेक्स जाता है एंड इफ यू सी दैट देयर इज सप्लाई, देयर इज अ सप्लाई प्रेशर, देयर इज अ bearishness in the index, you can start to sell. So that is how the next trading session can look like for the Nifty 50 index. BankNifty index, wow, I love this index by the way. BankNifty index, as I keep saying that, पागल हाथी है, काफी अपॉर्चुनिटी देता है, but again you have to keep yourself safe as an option buyer from such trading days. Can you see that? 400 पॉइंट से कम की रेंज है ये. 400 पॉइंट से कम की रेंज है, 32,000 से लेके 32,232. इतनी छोटी रेंज जिसके अंदर 200-250 पॉइंट की रेंज के अंदर पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट करता रहा. आप कभी अगर ये सोचेंगे यहां ब्रेकआउट मिल जाएगा,
फॉल्स ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट, फिर सोचेंगे ब्रेकआउट मिल जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट, फिर सोचेंगे ब्रेकआउट मिलेगा, फॉल्स ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट। अगर आप सोचेंगे ब्रेकडाउन मिलेगा, फॉल्स ब्रेकडाउन, स्टॉप लॉस हिट, फिर आप यहां पे कहीं सोचेंगे ब्रेकडाउन मिलेगा, फॉल्स ब्रेकडाउन, स्टॉप लॉस हिट। इतनी बड़ी बुलिश कैंडल आई है, अब तो परफेक्ट है, मेरे को ब्रेकआउट मिलेगा, फॉल्स ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट। नो, नॉट अ डे फॉर ऑप्शन बायर। मत करो भैया रोज ट्रेडिंग, मान जाओ मेरी बात। मेरा काम है मेरी एनालिसिस शेयर करना, मेरा काम है लेवल शेयर करना, मेरा काम है मेरे ट्रेड सेटअप्स, प्रोबेबल ट्रेड सेटअप शेयर करना। अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही है, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में फिट नहीं हो रहा है एज एन ऑप्शन बायर, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पोजीशन साइजिंग नहीं फिट हो रही है एज एन ऑप्शन बायर इसके अंदर, मत करो ट्रेड, छोड़ दो, छुट्टी ले लो आज मार्केट से, कल कर लेना। ट्रेड तो रोज अवेलेबल है ना आपके लिए, 365 दिन में से 225 ट्रेडिंग सेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं, कर लेना ना यार, कैपिटल प्रिजर्व कर लो। रोज रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है दोस्त, आपको आपका कैपिटल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, इट्स योर बिजनेस माय फ्रेंड, ट्रीट इट लाइक बिजनेस। अगर आप स्टॉक मार्केट में पॉकेट मनी कमाने आए हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक ऐसी इनकम जनरेट करने आए हो जिससे कि एक महीने के अंदर मिलेनियर, बिलेनियर, ट्रिलियनियर, कचरा पिट जाएगा, प्लीज डोंट डू दैट। सो नो अपॉर्चुनिटी ओवर हियर एज एन ऑप्शन बायर। वी वोंट इवन डिस्कस कि कहां बाइंग बनती थी, कहां सेलिंग बनती थी, कुछ ऐसा बनता ही नहीं था। इन सच, जैसे निफ्टी में हमने बात करी, ये जो सपोर्ट था सीपीआर का, अगर यहां से रिवर्सल पे हमने बाइंग कर ली होती तो दिस इज द ओनली मोमेंटम दैट यू कुड हैव कैप्चर्ड, बट अगेन कोई श्योरिटी नहीं थी, इट वाज अ साइडवेज मार्केट। सो आई स्टिल कीप सेइंग दैट कि फर्स्ट 30-45 मिनट्स तक तो मैं ट्रेड ही नहीं सेटअप करता हूं, कोई ट्रेड नहीं लेता हूं। सेम थिंग हैपेंड कि बहुत रेयर केसेस में फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर ट्रेड लेता हूं, अगर बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो। अगर मैंने 30 मिनट्स के अंदर ट्रेड नहीं लिया होता तो उसके बाद तो कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। ओके, सो लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, इनिशियल रेजिस्टेंस विल कम इन एट दिस लेवल 32 दिस लेवल इज द रेजिस्टेंस, इनफैक्ट दिस होल जोन इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्क कर लीजिए आप, यहां पे रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 आपका है 32,358, ये आपका रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 हो गया। सपोर्ट की अगर हम बात कर लें, देखिए सपोर्ट आपको इनिशियली तो यहीं पे मिल जाएगा 31,800 I would say 31,866 level is your support 1 for the index, and support 2 is right here 31,693. But what I feel is index might go up from here on. If HDFC Bank declares good result, other banks will follow with the HDFC Bank, and the index can go up, and 32,000 will become a good support. That is a possibility over here, so we have to watch that out. As of now, अभी हमने ये levels discuss किए हैं क्योंकि ये दिख रहे हैं। इसको एक बार larger time frame पे भी हम discuss कर लेते हैं। Larger यानी बहुत large 1 hour पे हम discuss नहीं कर रहे हैं, 15 minute time frame पे discuss कर रहे हैं। So we did make a channel over here, and the channel broke out. इंट्राडे बीच में कहीं ब्रेकआउट हुई थी वो चैनल नीचे की ओर, बट उसके बाद भी कंसोलिडेशन ही रहा, कोई खास मूवमेंट नहीं आया। सो काइंड ऑफ नॉट अ वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन द लास्ट डे ऑफ मार्केट। सो 1 सेकेंड, ओके, सो नॉट अ वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन द लास्ट डे ऑफ मार्केट। देखिए सीपीआर तो रिस्पेक्ट होता है यार, सीपीआर को अगर आप मान लो रिस्पेक्ट होता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। 99% ऑफ द डे सीपीआर इज 90% ऑफ द डे सीपीआर इज रिस्पेक्टेड। आपको यहां पे मल्टीपल टाइम्स दिखाता हूं मैं। सीपीआर जोन सेंट्रल पाइवट रेंज पे आया, टुक ऑफ 1 टाइम, ठीक है, सेंट्रल पाइवट रेंज पे आया, टुक ऑफ 2nd टाइम। अगेन यहां पे भी अगर आप देखेंगे, इट डिड नॉट टेक ऑफ बट इट डिड नॉट ब्रेक द सेंट्रल पाइवट रेंज। सो अगर सीपीआर रिस्पेक्ट हो रहा है, सो देन it can be a good opportunity as an option buyer to buy at the CPR range. Okay, now we look at the levels. अब थोड़ा पीछे चलते हैं, निफ्टी फिफ्टी की तरह इसको भी देखेंगे कि लेवल्स कहां से निकल के आए। कैन यू सी दैट वेरी क्लियरली ओवर हियर कि लेवल्स हमने कहां से निकाले हैं? कैन यू सी वेरी क्लियरली यहां पे इंडेक्स ने एक बड़ा डाउनफॉल फेस किया था। सो आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस इज दिस 32,413 ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम। 32,413 इज आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस R2 is 32,833, दिस इज योर सेकंड रेजिस्टेंस। कहां से निकल के आया है सेकंड रेजिस्टेंस? ये दिख रहा है आपको, यहां से डाउनफॉल आया था इंडेक्स के अंदर, ठीक है, और फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने यहां से निकाला है, हिस्टोरिकल जोन पूरा आपको दिख रहा है। सो जस्ट मार्क दीस लेवल्स R1 एंड R2, R1 एंड R2 दोनों आपके लिए बहुत क्लियरली मैंने यहां पे बता दिए हैं। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। हैवी बाइंग कहां से आई है? ये आपको पूरा जोन दिख रहा है बाइंग का, यहां पे आपको हैवी बाइंग दिख रही है मल्टीपल टाइम्स। तो यहां से आपका पहला सपोर्ट आएगा, ये मार्क कर लीजिए, सपोर्ट 1 31,698। हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट को अभी जस्ट डिस्कस किया था। लार्जर सपोर्ट, वेरी लार्ज सपोर्ट, इफ यू विल टॉक वेरी लार्ज सपोर्ट, इट विल कम राइट एट दिस रेंज, ठीक है, 31,000 से लेके 31,321 की जो रेंज है, यहां लार्ज सपोर्ट, ये पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फिलहाल इंडेक्स के लिए। But there are less chances that the index will come here, and there are high chances that the index will cross 32,000
and stay bullish from there on. That's what I sense as of now. I might be wrong. Nobody is a god in stock market. हर इंसान गलत हो सकता है, and I am a normal human, my friend. So you can be wrong, I can be wrong. It's just that how beautifully can we accept our mistake, or not, let's not call it a mistake. How beautifully can we accept that yes, I was wrong. That's okay, but the stop loss saved me. So it's okay if you hit your stop loss sometimes. You have to trail your profits to a larger targets that you have to learn in the markets. So larger time frame पे हमने Nifty 50 index की बात कर ली है. What else is there to discuss? Let's quickly look at the global markets as of now. What are the global markets saying? US markets कहाँ close हुए हैं? Again, US markets, Dow Jones was up by 164 points. US volatility index has gone further down, 16.3 पे आ गया है. अपना volatility index फिर भी बहुत high है इस समय, but US volatility index has gone down. Nasdaq also closed up, so that there's a global positivity. Look at the European markets, both FTSE and DAX, both are up. You know, European markets are up there, 204 points up and 10 points up in the FTSE. So globally, things are looking positive. Locally, things are not looking that much positive. Things are looking just fine, I would say. So as we have been discussing from a while now, positive global cues versus the local negative news available in the markets, primarily because of the coronavirus resurgence in cases. So all you have to do is follow the levels. आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से कि क्या ग्लोबल पॉजिटिविटी है, क्या लोकल नेगेटिविटी है. प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है इंट्राडे ट्रेडर के तौर पर, आपको यह देखना है. प्राइस एक्शन इज द गॉड फॉर अस. अगर प्राइस एक्शन बोल रहा है कि यहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, सेल करेंगे. प्राइस एक्शन बोल रहा है बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बाय करेंगे. स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करेंगे, टारगेट को रिस्पेक्ट करेंगे. सी, दोस पीपल हु टेल यू स्टॉप लॉस आर नॉट अ गुड थिंग. ओके, स्टॉप लॉस आर नॉट अ गुड थिंग इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर. इवन फॉर एन ऑप्शन सेलर यू नीड टू हैव अ स्टॉप लॉस. उसके तरीके अलग होते हैं, स्टॉप लॉस की रेंज अलग होती है, एंड थिंग्स लाइक दैट. इफ यू आर हेजिंग योर पोजिशन, even then sometimes you need a stop loss if market completely goes against your direction. So stop loss are a good thing, very good thing if you are an option buyer, and I believe that 90% of the retail traders out there are option buyers. Tell me if I am wrong. आप लोग इतना कैपिटल लेके नहीं आते हैं कि आप ऑप्शन सेलिंग पे डायरेक्टली जा सकें. आउट ऑफ एवरी 100 पीपल आई हैव सीन अमंग्स द मेंबर्स इटसेल्फ 2,500-3 हजार लोग होने वाले हैं टेलीग्राम के ऊपर, 10,000 सब्सक्राइब. First of all, thank you to all of you, my friends. We are now a strong community of 10,000 people on the YouTube channel. I just forgot to mention that up. Thank you so much for your support. It's a blessing to have you all with us, connected all the time, and we are making sure that we are empowering ourselves with knowledge. So what I was saying is, out of those 10,000 people, I truly believe at least 9,000 are option buyers. Not everyone comes with a big capital of option selling. ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग की कैपिटल ही लेके आते हैं. तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपके पास क्या ऐसे टूल्स हैं जिसके बेसिस पे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर के तौर पर. नंबर 1, कम विद अ गुड कैपिटल. बहुत छोटी सी कैपिटल लेके आओगे, इरोड हो जाएगी, स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि इस बात को मान लो. नंबर 2, स्टे डिसिप्लिन्ड. व्हाट डू आई मीन बाय डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब है कई चीजें. पहली बात तो हर रोज ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है. ट्रेडिंग हर दिन आपके लिए ओपन है, बट आप ट्रेडिंग के लिए हर दिन ओपन हो ये जरूरी नहीं है. आपकी प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, कहां आपका ट्रेड सेटअप फिट हो रहा है ये ढूंढो और फिर ट्रेड करो. सेकेंडली, स्टॉप लॉस इज वेरी मच फाइन, टारगेट्स आर वेरी मच फाइन. उसके बाद मार्केट कहीं भी जा रहा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हमारा टारगेट हिट हो गया है, प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना सीखो. जैसे मैं लॉस को एक्सेप्ट करने बोलता हूं ना, वैसे ही प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट करना सीखिए. अगर प्रॉफिट आ गया है, सो एज आई कीप सेइंग दैट टू माई होल टीम ऑल्सो, ग्रीन इज गुड. Whenever you come into green, and if you think your green is good enough for you, stop trading for the day. Enjoy your profits. Enjoy your success for the day. That's how you become a good intraday trader, right? So, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है, धीमे धीमे ही सही आ रहा है, it's a very good thing as an intraday trader. So, all these things are important for an option buyer. हम हर दिन का जो एनालिसिस वीडियो लेके आते हैं वो इसीलिए लेके आते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें. सो आई होप यू आर मेकिंग ऑल द नोट्स एंड थिंग्स ओवर हियर फॉर एवरी एनालिसिस वीडियो. नाउ अगेन I want to thank you all from all my heart and my soul for building up this community to such level. So thank you for watching this video. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.